time it all finished. But to have seen them there would have been spectacular. You speak to people now still, you know, the Ian Bothams of this world, Viv Richards of this world, and you ask them who could bat of your era, Martin Crowe would be high up on that list. Very, very watchable, but he really played in that sort of old-fashioned, exquisite timing sort of way that made batting look so easy and stroked a cricket ball away. He was a touch player of the highest quality. A World Cup classic, and what a legend, Martin Crowe. Smithy, what are your memories of him? Well, I got a bit tearful there, looking at some of those replays. I played in that side with him. He was player of the tournament in that World Cup, and New Zealand didn't go on to win it, of course. One of the most elegant players I ever saw play. His trademark was hitting the ball, his driving down the ground through the covers, through mid-on, I think was so special. He loved the game. He absolutely loved cricket. He lived for cricket, and he was just such a sensational player. I could best sum it up probably by saying Wasim Akram, one of the greats of all time, said he was the most difficult batsman he ever bowled to. Now that for me is a compliment in itself. Martin Crowe, a living legend no longer, unfortunately, but in terms of New Zealand cricketers, the legend will live on forever. Only Williamson will be regarded with his numbers as a better player. What a great tribute from Ian Smith. On that note, let's find out about the surface, how it's likely to play in the second innings. Out in the middle is Ian Bishop. Yeah, they've swept the surface, they've brushed it, and it actually looks quite good. But with Spider-Cam here, I just want to point to the bowlers' follow-throughs. If he can come in and focus on these foot marks just going along here. We saw Aryan Dutt and Rula van der Merwe getting the ball to turn out of foot marks and off the good parts of the surface. That sort of tells you it's a little bit dry. There was a specific delivery as well from Paul van Meekeren, which got Daryl Mitchell. It hit the surface, it disturbed the top of the surface and went onto the stumps. And we saw Bas de Leder also taking a lot of pace off. So that tells you it's a dry pitch. You can still score runs on it, but with the bowling options of Henry, of course, Mit Satner, Rachin Ravindra, Glenn Phillips even, with a lot of pace off, New Zealand are going to make this very difficult for the Netherlands. Well, Dirk Nannes looking at that and thinking, shaking your head, you do agree, don't you? Absolutely. New Zealand are going to take the good stuff that the Dutch did. They're going to roll their fingers on the ball with the new ball. The spinners are going to be varying their pace. It's going to be a handful. The Dutch need everything to go right for them. They need a massive score from one of the top order. Smithy, when you have a look at New Zealand, how they absorbed pressure in those first 4 overs and then kicked on, and even in the quiet periods, you sensed there was no sense of panic. No, 50 overs is a long time. We dine out so much on T20 cricket these days, we tend to think you've got to go helter-skelter the whole time. This is a much more patient game, and you can see that even if you don't get the dream start, you can build and build, providing you always got batsmen at the crease, and they got left with Santner at the end, and they were able to cash in on that. Right, the target is 323, and we'll have live action after the break. बड़े होकर बिस्मा मारूफ बनोगी। आए बनाएं लड़कियों के लिए और क्रिकेट रोल मॉडल्स। कैडबरी डेयरी मिल्क, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। And he dropped it! Yeah! ये तो मैं बंद आंखों से पकड़ लूं। मौसमी एक्सपर्ट, जोंकी मंथली प्रो मैक्स से एक्सपर्ट कमेंट्री चलती रहे। 200 GB डेटा, 2000 दूसरे नेटवर्क मिनट्स, सिर्फ 1600 रुपए में। एक कप और है कितनों का बहाना, एक कप और तुम है एक और कप चाय, एक और कप चाय, टपाल दानेदार। फास्ट से जगमगाए हर खेल का मैदान, परफॉर्मेंस शानदार, रियल क्वालिटी की पहचान। फास्ट, तारों से सितारों तक। It's your time to shine. Show your glow. Golden Pearl Whitening Soap for all skin types. Love your skin. न बिजली जाती है, न बिजली का बिल आता है, तो आज ही बिजली के बिल को क्लीन गोल्ड करें।
इनवरेक्स सोलर एनर्जी, दिल की फिक्र से बेफिक्र। डिस्काउंट्स एंड डील से छोटे मोमेंट्स को बड़ा बनाता है मेरा पेपाक कार्ड। अपने बैंक से पेपाक डेबिट कार्ड नाम लेकर तलब करें। चूज होप, चूज पेपाक। The all-new Sabroso Crispy Chicken Strips taste so good that nothing else matters. Sabroso Crispy Chicken Strips, so crispy, so tender. एक घूंट में जागेगी खेल की उमंग। चाय और क्रिकेट, वाइटल पियो, जिंदगी जियो। अपनों की रैलीज पे रहें, एक कॉल पे मौजूद, ताकि मुस्कुराते रहें पाकिस्तानी, खुशहाल रहे पाकिस्तान। KNNs। चाय और क्रिकेट, वाइटल पियो, जिंदगी जियो। Welcome back to the city of Hyderabad, where we are in the middle of match number 6, the ICC Men's Cricket World Cup 2023. Netherlands taking on New Zealand. The Netherlands who won the toss and elected to bowl first. And they're looking at 323 as a target to win this match. And here we go, match 6 of 45, New Zealand versus Netherlands. On a pitch that seems a little abrasive, ball wasn't coming onto the bat, and a large chunk of the innings you would have thought that Netherlands had the measure of New Zealand, but just towards the end lost a bit of control. Look at the contribution of Mitchell Santner. That's the thing with this New Zealand side, they bat deep. Top scorer Will Young with 70, Ravindra as well getting another 50, carrying on from his form from the last game, and Tom Latham, the captain, on 53, made a good contribution. You can see no massive partnership, but enough to just keep that rhythm going for the innings. And I keep saying this is not a belter of a pitch, so those partnerships crucial. And towards the end, when you look at 68 runs being scored for the last 2 wickets, that's where you would think that the match may have changed its course a little bit, and the balance as well. The off spinner once again with the new ball, getting 2 for 62. And a couple of wickets, McCurran and Van der Merwe. 2 wickets for 56 for the left-arm spinner, and 1 wicket to the leader, who bowled better than those figures show. The big target, but recently has scored over 300 runs against the West Indians in a qualifier, so don't rule the Netherlands out yet. So New Zealand will go into the customary huddle. Never been part of a huddle, but obviously they are good because they tend to work from time to time. Number 18 there is Trent Bolt, and he will have the new ball. Tom Latham saying, look, we've got a good score here, fellas, but we need to be good in the field. We need to be consistent with our line and length. Game 6 is here in Hyderabad, and this is the opening pair for the Netherlands, who have got quite a target to go after. They're a talented bunch, and they've done it before to qualify. They've been really good for most of today, about a 90% effort I'd give them. It just got away on them at the end. Latham was part of that, so was Santner, and because of that, New Zealand will feel pretty comfortable that they can defend this. But Vikram Singh, Max O'Dowd, Dirk Nannes might have something to say about that in the early overs. A lot rides on this partnership. I think if you look down that New Zealand scorecard, no one really went on with it whilst they put on a massive total.
There was no one there who really put their hand up and made that big 100. And I think that tells something about the surface that they're playing on. It speaks to the slowish nature. That man on screen, Vikramjit Singh, such a young, exciting talent. Under 50 in the previous game. And his accomplice in Max O'Dowd. The Dutch average 50 in the first 10 overs. I'm not sure whether they're going to score that quickly tonight. I think the important thing for them is to withstand this early onslaught from the New Zealand quicks, negate the swing or seam if they can for as long as possible, and give that middle order of Holland that sometimes is susceptible, sometimes is capable of doing the miraculous. Try and allow them the freedom to go about their work. Got a 50 against Pakistan. Vikramjit, his partner didn't quite get going, but his numbers are suggestive of an improved performance for sure in this game. To begin with, you would think the ball will come onto the bat. There will be swing, but the ball will come on. And there is a general sort of, tendency of pitches here in India. Even if they start off dry, once it's nightfall, batting gets just that wee bit easier. See whether that happens tonight. On the odd occasion it doesn't, but generally it does. Well, it'll be interesting to see under these lights and with this atmosphere whether Trent Boult can get it to swing. Away from the left-hander here and seeing they've got major part of the innings when the New Zealanders were batting, you thought they would end up with 270, 280, and you thought the Netherlands had the measure of them. The pitch is not the flattest, but somewhere you thought with the kind of batting depth that New Zealand have, with the dangerous Mitchell Sandman number 8, that they also felt that towards the end they would get those extra 15, 20 runs. target the front pad here. Right on the money. Trent Boult, he is deadly. Angling into the right-handers. Doesn't have to move a lot, just enough to defeat that inside edge, and he'll be in business. Let's watch the front pad. Dowd. Yeah, it was on middle and then just moved back a little. That's good. Can't be rooted on off stump against Trent Boult. You've got to have light feet against him with that big ball coming back in. You can see what he's doing. You can see the plan. He just hasn't nailed the execution yet. In the car on the way here today, Sanjay, you were reflecting about the decision for Australia to bat first in Chennai on what was a low, slow surface. Here, the Netherlands win the toss and bowl. And he said, you were saying that a lot of the foreign teams coming to India always choose to bat first. Sometimes it's better to do the flip side, like what the Dutch have done. What do you think of their choice at the toss today? Well, I think it makes sense, because when you look at a lot of the night matches played, your day-night matches, and even New Zealand were keen to, bowl first and chase down. Seen numerous IPL matches where a pitch in the afternoon has more to offer with the spinners and seamers. Maybe this is that ball where he cuts the seam a little bit, left the right-hander. Temba Bavuma, the South Africa in that game, said that the pitch played better in the second half. So that happens often. Wait and see whether that is the case here. An Aussie assault in terms of the officials tonight. Very experienced campaigners. Last ball of Boult's first over. 2 singles that will result, so safely through there the Netherlands, and both off the mark, 2 for none. बड़े होकर बिस्मा मारूफ बनोगी। आए बनाएं लड़कियों के लिए और क्रिकेट रोल मॉडल्स। कैडबरी डेयरी मिल्क, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। एक घूंट
में जागेगी खेल की उमंग। चाय और क्रिकेट, वाइटल पियो, जिंदगी जियो। कैश की जरूरत हो तो पूरा करता है मेरा पेपाक कार्ड। अपने बैंक से पेपाक डेबिट कार्ड नाम लेकर तलब करें। चूज होप, चूज पेपाक। It's your time to shine. Show your glow. Golden Pearl Whitening Soap for all skin types. Love your skin. Against England, he's a genuine wicket taker. His action at the moment is completely under control. Seam up deliveries and 2 slips to support that. Top edge. It will not carry down as far as Trent Bolt, and they will pick up a couple. The right shot selection. The ball was on leg stump, and this is the kind of shot Kushal Mendis was playing in Delhi the other day. It's picking up from that length. Slight execution. Played it a bit too early, closed the face of the bat a bit early. 3 wickets in the last match, Matt Henry. One of the things, Dirk, you'll be pleased with this World Cup, and I saw in the Asia Cup as well, for the first few overs, 2 slips has been the norm. A lot of teams have looked to place 2 slips instead of just the 1 token catcher. I think that shows the premium
बड़े होकर बिस्मा मारूफ बनो। आए बनाएं लड़कियों के लिए और क्रिकेट रोल मॉडल्स। कैडबरी डेयरी मिल्क, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। लाइट चली गई यार, मैच कैसे देखेंगे? माई जोंग ऐप से माइको पर अब जोंग कस्टमर्स आईसीसी वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखें माई जोंग ऐप से माइको पर, वो भी बिल्कुल मुफ्त। अपनों की रैलीज पे रहें, एक कॉल पे मौजूद, ताकि मुस्कुराते रहें पाकिस्तानी खुशहाल। Pakistan. Cannons. At one stump, here's Henry. Living quite dangerously at the moment, Vikram Singh. Sometimes. Coming at you, and I just love the way, directed. Nervousness at the moment just to get some runs on the board. Watch here when he picks up the ball. Sometimes the ball doesn't get in clean. So if you watch here when he actually picks the ball up, gets that little bounce, and it takes him a little bit of time to actually get the ball. He's kind of fumbling the ball to try and get it truly into his hand. It's not always as clean. As you might think. He's done a great job there. Tough length delivery is the way to go. They're still happy with one slip. But I guess they'll just try this again, the new batter, for a while before they start shortening the length.
hello, 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 hello. Hello, 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 hello. चलो ये तेरे काम से कहना किसी वापस ओ फाइन है ब्लूटूथ वाला आपका ओनली हेलो 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 जैसा कि आप देख रहे हैं स्पोर्ट लॉक स्पोर्ट लॉक दो बंदे स्पोर्ट लॉक यस होता है हंसो हंसो Nicely timed, and that may be hauled in. The same Lockie Ferguson will get it. Quick across the surface. hello One of the easier players to identify in the outfield is Lockie Ferguson. He has this thing about having the same color shoes as the uniform. वेलकम टू स्पोर्ट्स लग इस वक्त नेदरलैंड बैटिंग कर रहा है न्यूजीलैंड ने 322 रन बनाए 7 विकेट्स के नुकसान पर और अब 20 रन है नेदरलैंड के 5-6 ओवर्स में इस वक्त नेदरलैंड बड़ी मुश्किल में हो सकता है अगर उन्होंने विकेटें गंवा दी Wickets in hand, keep them in hand for a charge later on perhaps. It might not be easy, but that's the strategy. सो न्यूजीलैंड को विकेटें चाहिए यहाँ पे अगर उन्होंने ये मैच जीतना है और नेदरलैंड की कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टनरशिप करके प्रेशर डाला जाए अपोजिशन पे इस वक्त 5-6 ओवर्स हो चुके हैं और 21 रन है नेदरलैंड के बगैर किसी नुकसान के Clearly there's no swing. They've made a real attempt to get that ball to swing. Lots of balls have been bowled right up to the batter. Time now too. There's the hotness halfway down the pitch. बॉल की है बॉलर ने और ये आउट हो सकते हैं लेकिन ये एज हो गया था आउटसाइड और आउट हो गए हैं ये बोल्ड कर दिया है मैक हेनरी ने न्यूजीलैंड को पहली ब्रेक थ्रू मिल चुकी है
अब यहाँ से न्यूजीलैंड की कोशिश होगी कि जल्द से जल्द नेदरलैंड को आउट किया जाए और अपनी रन रेट को बेहतर किया जाए। कमाल की डिलीवरी थी और पूरी तरह बीट हुए सिंह और इसको समझ नहीं पाए। हेनरी की पहली विकेट, न्यूजीलैंड का पहला ब्रेक थ्रू इस पावर प्ले में। अगर ये मैच जीतना है नेदरलैंड को तो यहाँ पर पार्टनरशिप बिल्ड करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर वक्फे से ये विकेटें गिरती रहीं तो नेदरलैंड ये टारगेट चेस नहीं कर सकेगा, जैसे कि पहले मैच में कॉनवे और रविंद्रा ने किया था इंग्लैंड के ख़िलाफ़। उसी तरह की बैटिंग करनी होगी नेदरलैंड को। लेकिन इस वक्त नेदरलैंड को पहला नुकसान हो चुका है। 21 रन पर 1 विकेट है और नेदरलैंड इस वक्त मुश्किल में हो सकती है। जो रन रेट है रिक्वायर्ड वो 6.44 है, लेकिन जो करंट रेट है वो 3.50 है, जिसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जो नए व्यूअर्स आ रहे हैं हम उनको वेलकम कहते हैं। और नए बैट्समैन आए हैं कोलिन और बोल्ट आए हैं बॉलिंग करनी राउंड दी विकेट और ये 1 रन हासिल किया ऑफ साइड पर खेल के। इस वक्त 22 स्कोर हैं और एक खिलाड़ी आउट है 6.2 ओवर्स में। एक्करमैन बैटिंग कर रहे हैं और डिफेंसिव अंदाज में खेला, इसको कोई रन नहीं बना इस बॉल पे। और इस वक्त नेदरलैंड थोड़ा सा मुश्किल में 6.4 ओवर्स हो चुके हैं, उनके सिर्फ 22 रन हैं और 1 विकेट भी गंवा चुके हैं। अगर इस तरह का बड़ा टोटल उनको चेज़ करना है तो यहाँ से उनको पार्टनरशिप करना होगी, अग्रेसिव खेलना होगा थोड़ा, ताकि वो ये मैच जीत सकें। इस वक्त मैकनरी वो मैन है कि जिसने फर्स्ट विकेट दिया है न्यूजीलैंड के लिए और वो खुश भी नज़र आ रहे हैं। बॉल ने दौड़ना शुरू किया है और बॉल किया है और ये लेग साइड पर खेला है, ये चौका हो सकता है, 4 रन हो सकते हैं। फील्डर चेज़ कर लेंगे या नहीं ये देखते हैं। और ये मैक्स सेंटर ने ये बॉल को चेज़ किया और ये 3 रन हासिल कर लिए हैं। इस तरह नेदरलैंड के स्कोर में 3 रन का इजाफा हो चुका है। बहुत ही अच्छा शॉट खेला था, फ्लिक किया था लेग साइड पर और जिसको सेंटर ने बड़े अच्छे तरीके से फील्ड किया और 1 रन बचाया अपनी टीम के लिए। अब बढ़ता हुआ स्कोर 25 हो चुका है और एक बॉल फिर बच गए। गुड लैंड डिलीवरी की थी बॉल्ट ने और इस वक्त थोड़ा सा मिस किया। इस तरह ओवर का अख्ताम, 7 ओवरों में 25 रन, 1 खिलाड़ी आउट। अगर हम देखें कल वाला मैच जैसे कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान हुआ तो वो लो स्कोरिंग मैच था। ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलकर स्कोर बनाए थे तकरीबन 200 और जवाब में इंडिया की तरफ से विराट कोहली दी किंग ने कमाल कर दिया, करे कप्तानी, एक अच्छी बारी खेली और इंडिया को पहली जीत दिलाई है इस वर्ल्ड कप में।
25 रन हैं। नेदरलैंड के एक खिलाड़ी आउट है और न्यूजीलैंड ने 322 रन बनाए थे। और ये हेनरी ने बॉल किया और ये ज़ोरदार अपील एलबीडब्ल्यू के लिए, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट दिया है और ये आउट नहीं है। ये क्या कहा है अंपायर ने इस वक्त, देखते हैं डीएलएस लेते हैं या नहीं लेते। रन हैं और 7.1 ओवर हो चुके हैं। 25 रन हैं। ये ऊंचा था बहुत, इसलिए अंपायर ने नॉट आउट दिया है। हेनरी ने पैर को क्रॉस किया, बॉल किया और ये खेला है ऑफ साइड पर। दोनों फील्डों को बीट किया, लेकिन वहाँ पर मौजूद है फिलिप्स, उसने बॉल को फील्ड किया और 1 रन का इजाफा नेदरलैंड की टोटल में। अब नेदरलैंड का बढ़ता हुआ स्कोर है 26 और एक खिलाड़ी आउट है उनका। देखते हैं कि नेदरलैंड आज ये बड़ा टोटल चेस कर पाता है। अगर ये हो जाता है तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी नेदरलैंड के लिए कि आप अगेंस्ट वेरी बेस्ट टीम जीत जाएंगे। और ये मिसिंग था विकेटों को। इस बार हेनरी ने बॉल किया है और डिफेंसिव अंदाज में खेला है इसको बैट्समैन ने। इस वक्त 3.3 ओवर हो चुके हैं और 26 रन है नेदरलैंड के। इनको रन चाहिए। रिक्वायर्ड रन रेट है जो 6.44 है, जबकि जो चल रही है वो 3.46 है। दोबारा बैट्समैन तैयार हैं। हेनरी ने बॉल किया है और ये डिफेंसिव अंदाज में खेला है बैट्समैन ने सीधा ऑफ की तरफ। फील्डर के हाथों में कोई रन नहीं, ये बॉल भी बीट हुआ। 7.4 ओवर्स में 26 रन हैं। देखते हैं अब क्या होता है। हेनरी ने दौड़ना शुरू कर दिया है बॉल करने के लिए और ये बॉल की है और एक बार फिर सिंगल लेना चाहते थे, लेकिन बॉल सीधा फील्डर के हाथों में गई है और कोई रन नहीं हासिल हुआ। इस वक्त 26 रन है 7.5 ओवर्स में। और अब ये प्रेशर बिल्ड हो रहा है दोबारा नेदरलैंड पे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये टारगेट चेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। बॉल की है बॉलर ने और डिफेंसिव अंदाज में खेला इसको डाउड ने और इस पर कोई रन हासिल नहीं हुआ। इस तरह 8 ओवर मुकम्मल हुए और 26 रन हैं। कोई रन नहीं आया, सिर्फ 1 रन आया इस ओवर में। सो एक और अच्छा ओवर हेनरी का। देखते हैं कि आगे क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं नेदरलैंड के बैट्समैन के, कैसे इस बड़े टोटल को वो चेस करते हैं, क्योंकि 322 रन का टोटल है और अब तक उनका स्कोर 26 है, जबकि 8 ओवर्स हो चुके हैं। रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो रन रेट है वो कम होता ही चला जा रहा है। तो इसको ख़त्म करना बहुत ही ज़रूरी है अगर इनको ये मैच जीतना है तो। अब स्पिन अटैक आया है 8 ओवर बाद। सेंटर आए हैं बॉल करने के लिए, जो कि लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर हैं। सेंटर थोड़ा फील्ड में चेंज करते हुए 96 मैचेस में 93 विकेट्स ले चुके हैं। 4.86 इकोनॉमी है इनकी इकॉनमी। सेंटर हैं तैयार बॉल करने के लिए। दौड़े हैं और अंपायर को क्रॉस किया, बॉल किया है और ये बीट हुए फुली और बाहर सीधा लेथम के हाथ में गया। कीपर के हाथ में कोई रन नहीं आया। एक बार फिर सेंटर बॉल करने के लिए तैयार हैं। पैर को क्रॉस किया, बॉल की है और ये डिफेंसिव अंदाज में खेला। इस बार बॉल अंदर की तरफ आया और कोई रन नहीं। इस तरह ये 8/3 ओवर्स हो चुके हैं और 26 रन हैं। कोई रन नहीं आया इस ओवर में।
चौथी बॉल के लिए आए हैं। सेंटर अपना बॉल किया है और ये ऊंचा खेलना चाहते थे, स्लिप में कैच हो सकता था लेकिन ये एज हुआ, थिक एज हुआ और ये बाउंड्री की तरफ बॉल जा रही है। लगता है ये चौका है लेकिन वहाँ रविंद्रा थे, उन्होंने इसको चेस कर लिया, लेकिन ये चेक होगा कि ये 4 रन थे या नहीं थे। ये चेक कर रहे हैं कि ये 4 रन हैं या नहीं है, क्योंकि उनका जो पैर है वो शायद टच हो, लेकिन ये 4 रन नहीं है तो थर्ड अंपायर के पास जाना ही नहीं पड़ा और फील्ड अंपायर ने इसे 3 रन कंसीडर किए। अब इस तरह नेदरलैंड का स्कोर 29 हो चुका है। 8.4 ओवर्स में सेंटर ने बॉल किया है और ये खेल रहा है लेग साइड की तरफ और बॉल स्पिन हुआ और एज हुआ बैट से, लेकिन वहीं फील्डर के हाथ में चला गया। इस वक्त नेदरलैंड के बैट्समैन इंतहाई परेशानी के आलम में कि वो किस तरह इस ट्रबल से अपनी टीम को निकाल सकते हैं और बड़े टोटल को वो चेस कर सकते हैं। इस बार सेंटर ने दोबारा दौड़ना शुरू किया है, बॉल की है और ये स्वीप करना चाहते थे ऑफ साइड पर आके, लेकिन टोटली बीट हुए और बॉल सीधा कीपर के हाथों में चला गया। इस तरह ये ओवर भी ख़त्म हुआ। 9 ओवर का खेल मुकम्मल, 29 रन, 1 विकेट। ओनली वन। इस वक्त नेदरलैंड बैटिंग कर रहा है और उनके 9 ओवर्स में 29 रन है। अब तक न्यूजीलैंड ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है, चाहे उनको 1 विकेट मिली है, लेकिन उन्होंने स्कोर को उस तरह फ्लो नहीं होने दिया कि जैसा पावर प्ले में होता है। और आए हैं हेनरी ने बॉल किया है और स्ट्रेट ड्राइव, कमाल की ड्राइव खेली और ये 4 रन होंगे यकीनी। इस तरह 4 रन का इजाफा, अगर ये टारगेट चेस करना है तो इस तरह के स्ट्रोक्स खेलना पड़ेंगे नेदरलैंड्स के बैट्समैनों को और इसी सूरत में ये टारगेट चेस हो सकता है। फैंस इंतहाई खुश नज़र आ रहे हैं। क्या कमाल की, जिस तरह सचिन तेंदुलकर खेलते थे स्ट्रेट ड्राइव, उसी तरह पेस का यूज़ किया और बॉल की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया सीधा बॉलर के हाथों के नीचे से और ये 4 रन हो गए। अब दोबारा है बैट्समैन तैयार। हेनरी ने पैर को क्रॉस किया है, बॉल किया, डिफेंसिव अंदाज में खेला और एक रन आउट हो सकते हैं और ये अगर डायरेक्ट होती तो ये आउट हो जाता, लेकिन ये एक चांस गवा दिया न्यूजीलैंड वालों ने। ऐसे रन की कोई ज़रूरत नहीं है कि जिसमें चांस हो आउट होने का और ये एक एग्रेसिव रन था। और ये इंतहा की गलती थी, अगर ये आउट हो जाते तो नेदरलैंड को इसका खमियाजा इस वक्त बॉल बचे और सेंटर ने अपनी पूरी कोशिश की इसको आउट करने की। दोबारा बॉल किया और ये खेल दिया है, बहुत अच्छा शॉट था लेकिन कवर ड्राइव किया, लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में, तो कोई रन नहीं। इस तरह 9.3 ओवर्स में 34 रन हैं। आज न्यूजीलैंड की तरफ से यंग ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की है और न्यूजीलैंड के टोटल को इतना बड़ा करने में बहुत ज़्यादा मदद दी है। 70 रन बनाए 80 बॉल्स पे। दोबारा हेनरी ने बॉल किया और स्ट्रेट ड्राइव खेलना चाहते थे, आउट हो सकते हैं। सीधा बॉलर के हाथ में बॉल किया और हेनरी ने अंपायर की दोनों टीम्स एग्रेशन शो करते हुए, और अगर ये डायरेक्ट हिट होती जो हेनरी ने लगाई है तो ये आउट होते और बाल बच गए हैं। 2 चांस इस ओवर में मिल चुके हैं, 2 रन आउट मिस कर दिए न्यूजीलैंड ने। हेनरी दोबारा तैयार हैं बॉल और ये बॉल किया है और ये खेल 1 रन से लेना चाहते थे सिली की तरफ खेल के, लेकिन ये सीधा फील्डर के हाथों में गया। इस वक्त नेदरलैंड इंतहाई बड़ी मुश्किल में आ चुके हैं क्योंकि उनका रन्स बहुत कम है। पावर प्ले में 34 रन है ओनली और 1 विकेट गंवा चुके हैं। हेनरी ने पैर को क्रॉस किया, बॉल की है और लेग साइड पर कह रहा है 2 रन लेना चाहेंगे, लेकिन एक पर ही अपने आप को मुतमईन किया और दूसरा रन नहीं लेंगे। इस तरह 35 रन पावर प्ले के अख्ताम पर
नेदरलैंड के 35 रन हैं और एक खिलाड़ी आउट है। तो अब देखते हैं कि नेदरलैंड वाले क्या अगली फेज में कम बैक कर सकते हैं, जो मिडिल फेज होगा गेम का। अगर नेदरलैंड वाले इस फेज में विकेटें नहीं गंवाते और 5-6 के औसत रन करते रहते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग चांस होगा नेदरलैंड के लिए कि वो ये मैच विन कर जाएं। लेकिन न्यूजीलैंड का जो बॉलिंग अटैक है वो बहुत ही अच्छा है और वो इनको ये चेस नहीं करने देगा। जो हमारे नए व्यूवर्स हैं उनको वेलकम कहते हैं। और शानदार शॉट है, ये कमाल का सेंटर को शॉट खेला है और ये 4 रन हैं लेग साइड की जानिब ये खेला और इस तरह 4 रन का इजाफा हुआ है नेदरलैंड के टोटल स्कोर बोर्ड में। और ये स्वीप लगाया है, कमाल का स्वीप खेला है जैसा कि मोहम्मद रिजवान खेलते हैं और कोई फील्डर वहाँ मौजूद नहीं था और बॉल गोली की रफ्तार से सीमा रेखा से बाहर चली गई और सेंटर ने दोबारा बॉल किया है और ये बड़ा हिट लगाना चाहते थे लेकिन एक ही रन मिल पाएगा ऑफ साइड पर, सीधा फील्डर के हाथों में खेला। इस वक्त नेदरलैंड बैटिंग कर रहा है और अब बैट्समैन तैयार हैं फेस करने के लिए। बॉलर ने बॉल किया है और लेग साइड पर खेला है, बहुत ही अच्छी शॉट लगाया है और ये 2 रन मिल सकते हैं यहाँ पर और इजीली 2 रन हासिल कर लेंगे। इस वक्त नेदरलैंड इंतहाई मुश्किल में, अगर उनको ये मैच जीतना है तो यहाँ से अपनी इनिंग्स को एक्सेलेरेट करना होगा। सेंटर ने बॉल किया और ऑफ साइड पर खेला है, 1 रन मिलेगा क्योंकि यहाँ पर फील्डर मौजूद है। इस बार सेंटर आए हैं बॉल करने के लिए और अपना ओवर का 5वां बॉल करेंगे और ये आउट हो सकते हैं ज़ोरदार अपील और ये अंपायर ने आउट दे दिया है। जी हाँ, नेदरलैंड की दूसरी विकेट गिर गई है और इस वक्त नेदरलैंड को एक और नुकसान, एक और सफलता मिली है न्यूजीलैंड के बैट्समैनों को और नेदरलैंड की इस मैच में वापसी अब नामुमकिन हो चुकी है। दोनों ओपनर्स बगैर कोई बड़ा स्कोर किए पवेलियन वापस लौट चुके हैं। सेंटर ने कमाल की डिलीवरी जो अंदर आया और टोटली बीट हुए इस डिलीवरी से और अब वो पवेलियन की राह की तरफ गामजन है। इस तरह न्यूजीलैंड को एक और बहुत बड़ी विकेट, मेरे ख्याल में ये नॉट आउट था क्योंकि ये बॉल जो है वो लेग की तरफ जा रहा था लेकिन शायद वो रिव्यू लेते तो नॉट आउट होते, लेकिन बैट्समैन ऐसे ही चले गए हैं। देखते हैं कि इस वक्त क्या होता है। इस वक्त 2 आउट है, 43 रन हैं और नेदरलैंड की बैटिंग लड़खड़ा चुके हैं। इस वक्त 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। सो दैट्स वेरी डिफ़िकल्ट। सेंटर आए बॉल करने के लिए और ये बॉल किया है और स्ट्रेट खेला है, सेंटर को बीट किया इस बॉल ने। इस तरह 44 रन हो चुके हैं 2 खिलाड़ी के आउट नुकसान पर और ये देखते हैं कि रिप्ले की ये आउट था या नहीं था। और ये
वक्त 48 रन हैं, 2 खिलाड़ी आउट हैं, 11.1 ओवर हैं। रन हो चुके हैं 11.3 ओवर्स में। 4.52 रन रेट है इस वक्त। थोड़ा सा रन रेट बेहतर होता हुआ नेदरलैंड का, अगर इसी एग्रेशन से खेलते रहे तो शायद ये टोटल वो चेज़ कर सकें। और 4.3 ओवर्स हो गए हैं, ये बॉल B2 है, कोई रन नहीं। 52 रन्स, 2 खिलाड़ी आउट। न्यूजीलैंड का टारगेट 3 7 खिलाड़ी आउट हुए थे उनके। इस वक्त 52 रन हैं 11.5 ओवर्स में, 2 खिलाड़ी आउट हैं। और
इस वक्त 52 रन्स हैं, 2 खिलाड़ी आउट 13 ओवर्स में, 13.2 ओवर्स में। जो नए व्यूवर्स आए हैं हम उनको वेलकम कहते हैं। फिफ्टी 57 रन हैं 30.4 ओवर्स में, और रन रेट है जो 4.19 है, जो कि रिक्वायर्ड रन रेट है वो इससे बहुत ही हाई है अभी। भाई 59 रन्स हैं, 2 खिलाड़ी आउट हैं, 14 ओवर हो चुके हैं।
को हटा दो, उसमें करंट आया हुआ है, इसमें माइक में मैंने उड़ा बना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इस वक्त नेदरलैंड और न्यूजीलैंड लाइव मैच। 67 रन है इस वक्त, 16.3 ओवर्स। और फ्रंट कैमरा लग सकता है ना, फ्रंट कैमरा लग सकता है। कोई बात नहीं है, मैं भी उल्टा हुआ बैठा हूँ। नहीं, मैं उल्टा हो रहा हूँ ना। आप इस तरह कर रहे हैं इसको, फाइल को लाइव देख के मशहूर आप हो, इसलिए उल्टा आया बैठे जो है। इस वक्त 67 रन है, 3 खिलाड़ी आउट है, मुझे रन नजर नहीं आ रहे। ये हमारी लाइव स्ट्रीम, इस वक्त 67 रन हैं और 3 खिलाड़ी आउट हैं। यस, 322 रन का बनाया न्यूजीलैंड ने, उसके जवाब में अभी तक नेदरलैंड ने 67 रन बनाए हैं और 16.4 ओवर्स हो चुके हैं। कमेंट्री वाला सही है भैया, ये भी तजर्बा वैसे गोल्ड हो। मैं लाइव बैठा, सॉरी, आई एम ऑन लाइव ऑन एयर। जज्बात में तो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए अपनी हिफाजत के लिए हमने दिया स्टेट लाइफ सहारा फैमिली प्लान। स्टेट लाइफ, हमेशा साथ निभाए। क्या हो रहा है? फोटो फंस गया है। कितना बोलू लगता है बैठा मैं, मुझे नहीं करनी अभी, कोई मसला आ गया है ऐसे, हमारा नेट स्लो हो गया है। कौन सा? इस वक्त नेदरलैंड बैटिंग कर रहा है और सही चल रहा है, उल्टा सीधा चल रहा है, कोई बात नहीं है, हंस लें आप। कितने बजे देखें, ये हम बाद में
मसला हो गया भाई इनके कोल में ए एक्सपीरियंस थी कि नेट नेट का मसला है इस वक्त 68 रन्स हैं नेदरलैंड के 3 खिलाड़ी आउट हैं और 17.2 ओवर्स हैं करंट रन रेट जो है वो इस वक्त सो वेलकम बैक व्यूअर्स 69 रन्स हैं इस वक्त और 17.3 ओवर्स हैं अभी तक जो है वो अच्छी बॉलिंग की है न्यूजीलैंड वालों ने कि 3 विकेटें हासिल की हैं 70 रन्स पर और इस तरह ये मैच वो आसानी से जीत सकते हैं देखेंगे देखते हैं कि आगे क्या होता है इस वक्त 70 रन्स हैं नेदरलैंड के और उनके 3 खिलाड़ी आउट हैं 18 मुकम्मल हो चुके हैं इस वक्त नेदरलैंड की बैटिंग इंतहाई ट्रबल में अगर ये टारगेट चेस करना है तो उनको यहाँ पर विकेटें बचाना होगी लेकिन इस वक्त ऐसा नज़र आ रहा है कि ना विकेटें बचेंगी और ना रन्स पूरे होंगे सो मैं अभी तक लाइव आ नहीं आया आप देख सकते हैं
to score a one-day international double hundred. Oh my goodness, that is out of the park. Is it on the roof? You betcha! It is over the roof. Little sign there from Martin Guptill as he smashed 237 not out. The two-finger salute in that quarter-final was to Craig McMillan, because Craig McMillan had hit one ball onto the roof at the Wellington Stadium. That was the second time Martin Guptill had done it, and Craig McMillan was the batting coach at the time for New Zealand. Still remains the highest individual score in a World Cup, men's World Cup, by a batter. That one was for Ian Bishop. Beautiful set. Santner's ability is to vary his pace, and he's deceptive. Probably because of his bowling action. Doesn't use a lot of his front arm. It drops down, but it still completes the action. Gets it to bounce and spin. It's got a lovely length also, that irritating length for a batter. We can neither be forward nor back there once again. Allows the ball to spin at that pace. Yeah, from 83 to 81 to 79. You'll slide one through at 91, 92. Lovely set. Such a clever bowler, that term for sort of tall, languid. One of those terms used. To still drop the ball in that business zone, whether he's slackening it or firing it in, is just tremendous skill. Oh, yes, set. Beautiful boy. Brady for 3. बड़े होकर बिस्मा मारूफ बनो। आए बनाएं लड़कियों के लिए और क्रिकेट रोल मॉडल्स। कैडबरी डेयरी मिल्क, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। एक कप और है कितनों का बहाना, एक कप और तुम है एक और कप चाय। मैं एक और कप चाय, टपाल दानेदार। जीने को खुल के जीने को। एक्टिव लाइफ के साथ दिन रात KNN's डिलाइन। एक एक घूंट में जागेगी खेल की उमंग, चाय और क्रिकेट, वाइटल पियो, जिंदगी जियो। Moving forward into this World Cup, New Zealand, do you think they'd still prefer this to left-arm spin option? I would like to think that in some venues Ishsodi will play, but the issue with that is that I think Ishsodi needs bowling time as well. He needs opportunity to bowl some overs and get some confidence into him, because I think he'll play a big part of what we saw last night at Chennai, and it was a pretty average surface at Chennai in the first innings. It turned early on. Oh, Edge, where was that slip? He's gone. He was in there a few balls ago for Santner, but not for Ravindra. Extracting the drive. And again, it's the ability to vary your pace. This one's some 10k quicker than the ball just 2 balls before. Shame, but you didn't have the guy there. Some would say that you could still play 2 left-armers because both are very different. Santner slower, and we know that Ravindra likes to bowl at a quicker pace. Bangladesh and Afghanistan in Chennai, New Zealand play. So, oh, brilliant work, Glenn Phillips. Arachin Ravindra
tonight, just in and around that off stump. But he needs to just be a little tighter. The wicket came on just a touch wide of off. Oh, GP, brilliant boy. Phillips again. Some good work. 21 gone to 85 for 3. And he dropped it. ये तो मैं बंद आंखों से पकड़ लूं. मौसमी एक्सपर्ट हैं? Zonky मंथली प्रो मैक्स से एक्सपर्ट कमेंट्री चलती रहे. 200 GB डेटा, 2000 दूसरे नेटवर्क मिनट्स, सिर्फ 1600 रुपए में. जज्बात में तो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए अपनी हिफाजत के लिए हमने लिया स्टेट लाइफ सहारा फैमिली प्लान. स्टेट लाइफ हमेशा साथ निभाए. फास्ट से जगमगाए हर खेल का मैदान. For the early games of the tournament. So too in the Australia-India series. There's been a lot of big scores all the way around. It's early season. Look there, you see a lot of green on the square. And down in Chennai was no different. The square was green everywhere. You would think that it's certainly a considered thing that they want to prepare a wicket like that, because everywhere around that pitch would suggest that you can roll out the same type of pitch that we've seen all around the country. Almost producing pitches that are cookie cutter. Is over mid-wicket or wideish long on. For half a dozen does Nidamanuru. Very rarely does he. Low scores make an interesting contest as well. Tight games, and then you got to up the fielding so that you don't miss out on an बड़े होकर बिस्मा मारूफ बनो. आए बनाएं लड़कियों के लिए और क्रिकेट रोल मॉडल्स. कैडबरी डेयरी मिल्क, कुछ अच्छा हो जाए. फास्ट से जगमगाए हर खेल का मैदान. परफॉर्मेंस शानदार, रियल क्वालिटी की पहचान. फास्ट, तारों से सितारों तक. हमारी रिवायती खुशियों को यादगार बनाता है मेरा पेपाक कार्ड. अपने बैंक से पेपाक डेबिट कार्ड. नाम come up. Oh my goodness me.
It's a beauty from Ravindra. You can spin the ball at that pace. Obviously, you're in business. This was quick, and it turned from straight. Got away with it. He's got away with the filthy full toss down leg. That's horrible cricket. With both bat and ball. This could be a combination of the worst bit of cricket we've seen so far in this World Cup. Seen the odd stray ball. Pat Cummins the other night bowled one off the pitch. Yes, Chinny. Brilliant, Chinny. Nice, Jeep. As a young kid, he'd be loving this. Batting at number 3, bowling in tandem with Santner, hogging the limelight. He's making the headlines here in this World Cup. डिस्काउंट्स एंड डील से छोटे मोमेंट्स को बड़ा बनाता है मेरा पेपाक कार्ड। अपने बैंक से पेपाक डेबिट कार्ड नाम लेकर तलब करें। चूज हो, चूज पेपाक। It's your time to shine. Show your glow. Golden Pearl Whitening Soap for all skin types. Love your skin. चाय और क्रिकेट, वाइटल पियो, जिंदगी जियो। Fine Dustin van Meckeren. So these two, probably Scott Edwards, have got a bulk of the work to do. No longer, I think, Rameez and Dirk Nannes alongside it, no longer is batting 50 overs a good result. You've got to be trying to win these games. Any team that comes to this World Cup, your opportunities are few and far between. You don't get to them very often. The opportunities all that often. If you're bowled out in 43, 44 overs, so be it. But batting 50 overs and getting 230, 240, 250, 260, that's not a good result. More than the result, I think if you're chasing a score, it brings the best out of you. Because you've got this target. And so you're going for it, and so you, in fact, you're exploring yourself. You're expanding your range in the process, and you're finding out new things about yourself. The tournament play does make it a little bit interesting, though. It's probably the only time where you might not go for the win when all is lost. You don't just have your 8 and 9 come out swinging. You would actually try and bat out the overs. So I think you see it a little bit differently in tournament play because of the nature of net run rate going on. But it's a big ask at the moment. They've still got the likes of, if you know anything about Dutch cricket, the way that Scott Edwards can come in and just light the fire and light the fuse, and suddenly Holland are just coming at you. And scoring at 8 and over isn't such a stretch. So as you might think at the moment, yeah, it's just eking along. They need something to happen. They do have the firepower, but everything's got to go their way. He's a good player, Scott Edwards. A lot of time for him as a captain. He's quietly spoken in media conferences and things, and I think he's a really good captain and a terrific player. He's played some very fine innings. What you don't want is him coming in with
10 and over required, 11 and over required. Kind of what I'm trying to say. I don't think that's a great Turned out to be a half tracker, waited on it and then hit it ferociously. कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। लाइट चली गई यार, मैच कैसे देखेंगे? माई सॉन्ग ऐप से माइको पर अब सॉन्ग कस्टमर्स आईसीसी वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखें माई सॉन्ग ऐप से माइको पर, वो भी बिल्कुल मुफ्त। लापरवाही किसी से भी हो सकती है, इसीलिए अपने किसानों की हिफाजत के लिए हमने लिया स्टेट लाइफ हारी प्लान। स्टेट लाइफ हमेशा साथ निभाए। Men's Cricket World Cup for 2023. New Zealand posted 322 for 7. Lots of starts, 3 half centuries. Down, Chinny. Taken 3 wickets so far. Netherlands original rate 6.46. It's up to 8.28 now. Ravindra has been really good. What do you want to do with that? Am I going to whack it? Am I going to block it? Am I going to drive it? What I am going to do is plant the front foot waiting to try and slog it, and then I'm just going to push it into the offside. Probably 3 shots played in that ball. Drag down ball, but he gets away with it. Ackerman wasn't at the World Cup qualifier. Tasia Midamanuru scored 100 against West Indies. Lovely Rach, beautiful Rach. Beautiful Chinny. His batting lineup's been bolstered by the addition of Ackerman. What are you doing here, Rach? They did have a tendency in that tournament to be a little bit behind the raid at times and then have this way of exploding towards the back end, courtesy of Scott Edwards. Logan Van Beek, who isn't playing tonight. So they don't mind, they don't fear being behind a fraction. At the halfway mark, 114 for 3. एक और कप चाय टपाल दानेदार। हमारी रिवायती खुशियों को यादगार बनाता है मेरा पेपाक कार्ड। अपने बैंक से पेपाक डेबिट कार्ड नाम लेकर तलब करें। चूज होप, चूज पेपाक। Golden Pearl Whitening Soap for all skin types. Love your skin.
Trent Bolt. Ackerman has progressed to 44, had a good domestic season in the UK. Average over 60. Mint Satna, Wakai Yunus and Ian Smith alongside me. There have been a few run-out opportunities and he's been very good in creating them, Mint Santner. Well, I've set a field New Zealand to be aggressive inside the circle, and the Netherlands have given them a few opportunities. This was one here early on when the Netherlands had had their openers together, and Mitch Santner seized on that. He's terrific. Got to remember, he's terrific with that left arm of his. He's so natural. Missed by 31. Should be gone, Will Young. Oh, no. We were just... couldn't hold on. Yeah, ball was sort of going away from him, and he tried to settle himself and couldn't really get under the ball in time. Had to kind of dive it right at the end, but couldn't really hold. Communication have lost a player who was looking pretty good. This partnership was growing quite nicely, 49 of 54, and they both look quite settled. No issues there. Ran first one quite quickly, and then as he moved, he just denied. It was just too late. And a wonderful. Throw, quick throw, a little bit away from Latham, but he wasn't going to miss that easy run out there. Big wicket. Teja gone for 21. It's 117 for 4. The all-new Sabroso Crispy Chicken Strips taste so good that nothing else matters. Sabroso Crispy Chicken Strips. So crispy, so tender. बड़े होकर बिस्मा मारूफ बनो। आए बनाएं लड़कियों के लिए और क्रिकेट रोल मॉडल्स। कैडबरी डेयरी मिल्क, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। लाइट चली गई यार, मैच कैसे देखेंगे? माई Zong ऐप से माइको पर अब Zong कस्टमर्स आईसीसी वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखें माई Zong ऐप से माइको पर, वो भी बिल्कुल मुफ्त। And they'll want to put that run out. Certainly, Ackerman will want to put that run out behind him. Missed out in the previous game. Couldn't really open his account. Was caught behind of Haris Rauf's bowling. Quick delivery. He would like to start getting some runs. Excellent captain. Difficult period. He needs to get on quickly. 8.47 is the required run rate. Cover and mid-wicket are in very... I got to feel a bit sorry. Very sorry for Nida Manaru there, because I think he thought initially, and that's why he was committed, that Ackerman was coming. And the no came very, very late in the piece. Too late.
बड़े होकर बिस्मा मारूफ बनो। आए बनाएं लड़कियों के लिए और क्रिकेट रोल मॉडल्स। कैडबरी डेयरी मिल्क, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ देता है मेरा पेपाक कार्ड। अपने बैंक से पेपाक डेबिट कार्ड नाम लेकर तलब करें। चूज होप, चूज पेपाक। What a wonderful throw it was. He's got a strong arm. Well, the sad thing was the partnership was worth 50, and if the Netherlands were to get close, those two players had to stay. Oh, Ratch. That's beautiful, Ratch. And now, of course, they bring a new player out who's got to try and score at 8.5 runs and over to keep them in line. Too tough. And just looking at it as well, I mean, they were both, it's just miscommunication really, because they were both keeping their eyes, doing the orthodox thing when they ran, keeping the eyes focused on the ball, the bat in the correct hand when they touched down to turn. But one just thought there was and one thought there wasn't. Oh, Ratch. Lovely boy. Lovely chin. Ravindra definitely growing in confidence with ball in hand. His bowling is, yeah, he kept everything really. Close, allowed the ball to land first and made sure that he goes over the top. Looking at Scott Edwards' bat, he tries to manipulate the field. He's hit that over mid-on, so long on has to go back. 5-6. So he's removed one of those close-in fielders. Then he looked to sweep. Always trying to manipulate the field. एक्सपर्ट कमेंट्री चलती रहे। 200 GB डेटा, 2000 दूसरे नेटवर्क मिनट्स, सिर्फ 1600 रुपए में। चाय और क्रिकेट, वाइटल पियो, जिंदगी जियो। Bustling part of a city, bustling country in Matt Henry's back. 1 for 20 so far. Interesting to hear your thoughts on his second spell here, you guys, because it's often been his downfall a wee bit as his comeback spells. Is undoubtedly a terrific new ball bowler, Matt Henry. There's always been that little suspicion that he can be got when he comes back. So this is crucial. These overs, the Ravindra overs are crucial. They're building confidence for their fifth bowling option. But the Matt Henry return to the bowling crease, always interesting for me later on in of an innings. Half century for Ackerman. First World Cup half century. Third in one-day internationals. Most welcome for him, for his team. And he will want to drive this much further. And also, the 50 came in good time. 55 balls.
Yeah, that's not a good delivery. He's trying to bring the ball into the right-hander. Got the length wrong, ball too full, and it was easy pickings after that. A lovely shot to get to his 50. Good strike rate. He's a good player. It's a good question that Smithy asked there. If you've got the, I suppose, if you got the velocity to make an impact in the middle overs, he's very good, as you said, because of that length that he's bowled so far and movement off the seam with a new ball. Does he have tricks? Does he have skills? The cutters and so forth, and bowled an appropriate length in the middle overs. He bowls a short one. And they want the review. Henry wants a review. Let's hear from Joel Wilson. TV umpire to director. We have a player review for caught behind. The original decision is not out. I've already checked the front foot and it's a fair delivery. Let's move on to front on, please. That ball appeared to have hit his arm and not the glove, but keep going. And can you give me ultra edge, because there's a second glove involved. Contact with the arm here. Keep going. Pull it back. That second glove is my issue. Does it hit the second glove at all? Do you have another angle of ultra edge? I could see if it hits the second glove at all. It's inconclusive as to whether it touches the second glove. Okay. All right. Copy that. Going back to Rod on field. Rod, you'll be staying with your original decision of not out. Stand by, you're on screen. Signal now. Tell you what, that's a great decision. It's often we bag these guys and give them a bit of a hard time, but at full pace, to realise that that had hit just above the glove. Arm, and then he just bounced off the arm. 28 gone. One. कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए. एक घूंट में जागेगी खेल की उमंग. चाय और क्रिकेट, वाइटल पियो, जिंदगी जियो. Not sure what the second noise was, but there was definitely another noise that's, I think, also confused the bowler, and the bowler convinced him to take a review, and that's, I think, because of that second sound. Glenn Phillips, who picked up 2 key wickets in the first game against England. Joe Root and Moeen Ali.
Make us one here. Make us one here, GP. Only 8 wickets so far, but he's a useful off spinner. Loves his cricket, isn't it, Phillips? He loves his batting. He's a very busy batsman, and even when you give him a ball, he will keeps everything moving quickly. He'll give the energy to the team. Come on, boys, energy in here. Take it to nines, lads. Take it to nines. Good. Brilliant. Brilliant, GP. Brilliant, boy. Good this, lads. Three dots to sit, boys. They batted quite nicely. Ackerman pulled the ball pretty well. Likes to sit back on the back foot and don't mind going over the top. I like this. We talked about this across this tournament. Look at the intensity in the running. Yes, it's the big side of the ground, and yes, it's hit into space, but look at Edwards. That's one of the things that he brings to this Netherlands team as leader. Nice, Jeep. Nice, Jeep. Lovely, buddy. Excellent, boy. Finish off here, Jeep. Finish off. कुछ लम्हे सिखाते हैं सच्चे खरे की पहचान। आपके ऐसे ही लम्हों में कर रहे हैं हम सेफ और हेल्दी का यकीन। KNNs। लापरवाही किसी से भी हो सकती है, इसीलिए अपने किसानों की हिफाजत के लिए हमने लिया स्टेट लाइफ हारी प्लान। स्टेट लाइफ हमेशा साथ निभाए। Stance, but it's just glorious timing. Just beats the man at short cover there, which is not easy to do. It's Glenn Phillips. With a furrowed brow for Henry there.
Teja Nidamanaru and Colin Ackerman had their miscommunication. And just there, Teja didn't look back at all. And Ackerman ran 2-all on his own. And not too long thereafter, they're both looking at the ball. All the more reason for Ackerman to stay out there and try to get to 3 figures. Highest score is 81 in one-day internationals. Netherlands need one of these two to kick on and get something significant. Well, if to be a force in world cricket, they need to convert 50s into 100s. कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। And he dropped it. Yeah! ये तो मैं बंद आंखों से पकड़ लूं। मौसमी एक्सपर्ट, हाँ? Zonky मंथली प्रो मैक्स से एक्सपर्ट कमेंट्री चलती रहे। 200 GB डेटा, 2000 दूसरे नेटवर्क मिनट्स, सिर्फ 1600 रुपए में। एक एक घूंट में जागेगी खेल की उमंग, चाय और क्रिकेट, वाइटल पियो, जिंदगी जियो। Bolt got 4 remaining, 3 for Henry. Santner still got 5. Ferguson is my man. I think he can come in and bowl this with older ball with good pace. Good shape, good shape. Well, Colin Ackerman needs to get 100 here. Good boy, come on lads, go halfway. I think he needs to get 100 for the team, but he needs to get 100 for Colin Ackerman. They need a really big period here between overs 31 and 40. They need to get close to 80 or 90 runs here to threaten this target. But from an individual point of view, it's saying to a lot of people who bat around him or before him, we need hundreds. We need hundreds. Whether we're setting up or whether we are batting and chasing, we just can't do half measures. And that'll make them a much more threatening side day in, day out. Bigger numbers. Nice jeep, nice jeep. Well, the capability is there. They did it against West Indies in the qualifiers, so maybe this is a bigger occasion in losing early wickets. The opener's not really doing the job. In the qualifiers, it was the openers who were giving good foundation at the top, which hasn't happened so far in this tournament. This is their second game. And this pitch, a little bit slow, a little bit more for the spinners, I would say. To hit big sixes or boundaries are not that easy. You're taking Come, Jeep, come on, boy. 150 up, 150 for 4. न बिजली जाती है न बिजली का बिल आता है, तो आज ही बिजली के बिल को क्लीन गोल्ड करें। इनवर्क्स सोलर एनर्जी, बिल की फिक्र से बेफिक्र। चाय और क्रिकेट, वाइटल पियो, जिंदगी जियो। Another 173 needed from 114 deliveries. Colin Ackerman on 66 from 68 has played well, but in the context of the match, needs to add much more to this total. Lucky's back.
Good run. Now, Mr. Wakar Yunus, if you can bowl 150 or close to 140, say 145 anyway, that's not so much with a slightly older ball. What do you do at this stage? What do you say to Lockie Ferguson? Ackerman played really well, didn't he? He stroked the ball quite nicely, both sides of the pitch, on 67 of 69. Well, I will stick to his strength, his pace, and his stock delivery is back of the length. And set a field, keep mid-off, mid-on up in the circle and bang it short. Test them with the shorter deliveries. That's quick. It's not easy to pull or hook at that pace, especially when the ball coming into you. And he pushes the ball into the right-hander. He's only got 3 fielders on the boundary. He's got an extra fielder in. So he's on attack. Yeah, he brought that deep point up 2 balls ago once Scott Edwards got on strike. Now he's pushing him back out on the offside. Gives him that option of going more off stump at the high pace over 140, which he's operating at right now. Still got the fine leg and the deep backward square for the short ball to pull. With the conditions out there, the ball should be reversing right now. This ball is over 15 overs old, and with the dry pitch, most of the time you see the leather of the ball just come off. And at the moment he's bowling cross seam. He's not searching for any swing. He's ball short or ball with the angle from wide of the crease, looking to go straight at stumps. Did not see a pull shot coming to that length initially there at all. 154 for 4. बड़े होकर बिस्मा मारूफ बनो। आए बनाएं लड़कियों के लिए और क्रिकेट रोल मॉडल्स। कैडबरी डेयरी मिल्क, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। फास्ट से जगमगाए हर खेल का मैदान, परफॉर्मेंस शानदार, रियल क्वालिटी की पहचान, फास्ट तारों से सितारों तक। The same kind of spirit and commitment that we saw from Netherlands in the field, seen in this current partnership here. They've lost 4 wickets. Colin Ackerman getting 68, the very consistent run getter for Netherlands. And the captain has just joined him, batting on 16, running hard between the wickets. I know it's not as hot as it was in the afternoon, but still not easy running those singles and converting the ones into twos, which they have looked to do. Some more spin. Mitchell Santner in the 6th over. Nice set, nice set. There you go. Lovely boy. 50 overs cricket, so much about this. Putting the ball in the gaps, running hard between the wickets. Physically very demanding, this format. Yeah, the crucial part here for the Netherlands is to try and score off as many deliveries as they can. Keep it ticking over and then say, what bowlers do we look to target? Where can we push those ones into twos? Lovely, Mitchell. Lovely, buddy. You start looking at 17 and a bit overs to go, how you start making up overs, who are the bowlers that you want to target. They're needing 9.5 runs an over. The longer this game goes on, the less they keep up with that, it goes up